So question number 4, in periods of rising and persistent, please ख्याल करो ये दो words का कि there is a rising inflation, that means the percentage is going up, which is bad, and it's a persistent inflation, that means it's not fluctuating. So consumers and workers, they have to change their expectations of the future rate of inflation, right? So evaluate with the help of diagrams the consequence of these changes of expectations for fiscal policy. I hope you know what this fiscal policy is. I hope you know what inflation is. Please do define what is inflation. It is the general rise in the price level of goods and services in an economy in a given period of time. Um, once you've explained that, फिर आप जाएंगे अपना uh, a few things over here that you should be talking about. वर्कर्स की बात हो रही है और कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आता है और वर्कर्स की वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, राइट? और साथ ही में थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन जो है, ये असल में ये लाइन पहली दो लाइन पढ़ के मेरे दिमाग के अंदर जो आया वो आया फिलिप कर्व, बिकॉज फिलिप कर्व टॉक्स समथिंग विच हैज टू डू विद एक्सपेक्टेशन, जो आपका वो होता है ना ऑगमेंटेड expectation augmented Philip curve. So that is what has come to my head. So for that reason, even what they are suggesting also is that the kids have to take that first line where they define inflation. आसान है ये तो यस में करके आ चुके हो. The idea of something called Nairu. You remember what that is? I've talked about this Nairu concept. The non-accelerating inflation rate of unemployment. Non-accelerating inflation rate of unemployment. What does that really mean? What it means is कि देखें जी, इकोनॉमी के अंदर unemployment can be at 0%. That means everybody is working. It can be 1, 2, 3, 4, 5%. It can be 10% unemployment. होता यह है कि when there is an increase in aggregate demand, let's say in this case through fiscal policy, expansionary fiscal policy आप करते हैं, AD शिफ्ट करता है राइट पे. AD जब राइट पे शिफ्ट करता है तो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन भी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. तो अगर AD राइट पे जाने की वजह से, राइट, AD राइट पे जाने की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है. अनएम्प्लॉयमेंट के गिरने से इन्फ्लेशन आ रही है इस केस के अंदर. नायरू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इकोनॉमी में इतना वर्कफोर्स आइडल बैठा है, अनएम्प्लॉयड है, कि अगर एडी बढ़ता है और डिमांड आती है वर्कर्स की, तो वो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर है दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर हायर वेजेस because they're unemployed. They're willing to work for the given wage rate. So inflation is not going to happen. Okay? That's the idea of non-accelerating inflation कि आपकी इकोनॉमी में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है कि वो इन्फ्लेशन को एक्सेलरेट नहीं होने देगी. वर्कर्स खप जाएंगे डिमांड के साथ. ओके, दैट्स द आइडिया. अभी मैं इसकी पूरी वो भी दिखा देता हूँ सैंपल. Expectations mean workers and consumers, they have to change their perspective about the future rate and they're going to have an impact on their decision making. Workers के लिए salaries and consumers के लिए demand for goods. The use of ADAS analysis to show how inflation works, and this may be referred to as cost push and demand pull. AS का टॉपिक आ गया. फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप कॉस्ट पुश और डिमांड पुल करते हैं तो वही मेरे जो लास्ट 50 पेजेस के अंदर जब हम बात कर रहे थे
ऑफ द फिलिप कर्व, उसमें मैंने दोनों तरीके से तुमको डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों डायग्राम के साथ हमने प्रूव किया है कि मूवमेंट अलोंग द फिलिप कर्व हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड शिफ्ट इन द फिलिप कर्व हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पुश का व्यू। ओके। एंड किस तरह से उसके बाद पूरा एक हमने राइटअप दिखाया है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, इन्फ्लेशन आएगी और फिर वेजेस बढ़ेंगी और फिर आप वापस से ओरिजिनल लेवल्स पे आ जाएंगे। एंड द गवर्नमेंट विल कीप ऑन डूइंग दैट। देन दे वांट एन एनालिसिस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन चेंजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, किस तरह से वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, और इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेटली दे विल हैव टू बेयर। और फिर किस तरह से ये पूरा इम्पैक्ट आएगा, मैक्सिमम 2 लेवल इफ नो डायग्राम इज मेड। अब देख लो इसको क्या कह रहे हैं। So we start off by defining the term unemployment. Inflation is defined as sustained increase in the general price level in an economy in a given period of time. One important concept linked with inflation is unemployment, and linked to inflation and unemployment is the non-accelerating rate of unemployment, which represents the level of unemployment at which inflation remains stable. However, in period of rising and persistent inflation, consumers and workers, this is not part of Nairo, but yeah. However, in periods of rising and persistent inflation, consumers and workers begin to change their expectations about the future rate of inflation. Rather than assuming inflation will remain low, they anticipate price will rise continuously and they're going to ask for higher wages. ये बेसिकली इन्होंने थोड़ा जल्दी ये वाला इंट्रो दे दिया है। ये हमारा आगे क्वेश्चन के अंदर दिस वुड हैव बीन डिस्कस्ड एंड दिस विल बी डिस्कस्ड। ओके। Expectation plays a powerful role in economic behavior. क्योंकि remember क्वेश्चन के अंदर expectations की बात हुई है, तो I want to a little emphasize on that, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सेलरेटिंग एंड persistent inflation, तो यू नो एज वर्कर एंड यू नो एज कंज्यूमर कि आपकी जो नॉमिनल वेज है, जो आपकी मॉनेटरी वेज है, उसकी परचेजिंग पावर फ्यूचर में कम हो जाएगी, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप जाके वेजेस मांगेंगे, और जब वेजेस मांगेंगे तो कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आएगा, और जब आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, firms are going to experience so real output, price level, aggregate demand, aggregate supply, ओके। और जब वर्कर्स वेजेस ज्यादा मांगेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट लाइक दिस, the price is going to rise, the real output is going to fall, prices for goods will go up, the workers will again ask for higher wages. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट करती है जिसकी वजह से एडी राइट पे जाता है, तो इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन आती है, वर्कर्स का गुजारा नहीं होता, वो हायर वेजेस मांगती हैं। हायर वेजेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई पीछे जाता है, प्राइसेस और मजीद ऊपर जाती हैं। फिर वर्कर्स जो है वो फिर दोबारा से जो है हायर वेजेस मांगेंगी, तो उसकी वजह से जो है फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी। और मजीद, तो वेज एंड प्राइस स्पाइरल इज कि ज्यादा वेजेस मांगने से प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ने से ज्यादा वेजेस डिमांड होगी, वेजेस डिमांड होने से और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी और प्राइसेस बढ़ेंगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये स्पाइरल है, मतलब इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। So firms facing higher wage cost then increases their prices, okay, will then increase their prices to maintain profit margins, increasing a wage
creating a wage spiral that pushes inflation even higher. This dynamic can shift the short-run aggregate supply curve to the left as production becomes costly, और ये हमने दिखा दिया कि ये बाय द वे इसको आप स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होती है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ये कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, तो यू गोइंग टू से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यू नॉट गोना से स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का वर्ड यूज होता है फॉर द आइडिया जो कि होता ऑलमोस्ट प्रीटी मच कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के थ्रू ही, but when you have higher inflation and your economic growth and unemployment is rising, economic growth is rising, उसको आप stagflation कहते हैं। यूजिंग एन एग्रीगेट एडीएस फिस्कल पॉलिसी, जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है स्पेंडिंग और टैक्सेशन को कम करती है एडी को बढ़ाने के लिए, व्हाई? बिकॉज देयर एजेंडा इज कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं। तो जब वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेंगे। जब वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, राइट। तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेशन एंड सॉरी रिड्यूसिंग द टैक्सेशन एंड increasing the government spending. So this is what it is basically going to do, ठीक है। तो फिर हम आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन फिलिप कर्व की तरफ। वन सेकेंड। अब जो आपका एक्सपेक्टेशन फिलिप कर्व है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट फॉर अ सेकेंड। या आपका जो ऑगमेंटेड फिलिप कर्व हमने बनाया है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज वाइज गोज हियर, इन्फ्लेशन परसेंटेज वाइज गोज हियर। ये आपका शॉर्ट रन फिलिप कर्व होता है। Imagine this is the level of unemployment we have and this is the inflation rate that we have. Okay जी। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है, एडी को बढ़ाती है। ओके, एडी को बढ़ाती है। एडी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है और इन्फ्लेशन आती है। तो दैट मीन्स वी मूव दिस वे to this point where unemployment falls, inflation rises. Workers are unable to afford goods and services, and they expect that inflation is not going to remain here, but rather is going to go up. They're going to go and ask for higher wages. When they ask for higher wages, cost of production goes up, aggregate supply shifts to the left, the prices goes up, unemployment goes back to the same level. That means unemployment rises. Do you see what is happening? Unemployment भी बढ़ रही है और inflation भी आ रही है. What this does is it shifts your short-run Philip curve upward because you are experiencing both a rise in unemployment and a rise in inflation, and you come back to this point here. You understand this? तो ये मेरे वही दो डायग्राम, this causes a movement along the Philip curve and this causes a shift in the Philip curve. एंड इस तरीके से गवर्नमेंट बार बार अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी करती जाएगी और बड़े से बड़ी पॉलिसी करेगी और वर्कर्स उन पॉलिसी को बार बार दे विल एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन एंड दे विल रिएक्ट एंड व्हाट इट विल डू इज it will bring unemployment to the same level over and over again. एंड लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये इस तरह से बार बार अनएम्प्लॉयमेंट विल कम बैक टू द सेम लेवल ओवर एंड ओवर अगेन। ये आपका लॉन्ग रन फिलिप कर्व होता है वैसे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये आप कह लो लॉन्ग रन फिलिप कर्व कह लो, नायरू कह लो,
natural rate of unemployment कह लो, they all mean the same thing, which means that economy के अंदर आप बार बार अपने natural rate of unemployment पे जाएंगे. क्यों? क्योंकि every attempt the government tries to do to reduce unemployment, the workers will recognize that they will ask for higher wages, which will create cost push inflation and take unemployment level back to the same level. You understand this? तो ये हमारे इसके अंदर है. तो let me sort of एक छोटा सा पैराग्राफ इसकी बात कर लेते हैं. The expectation augmented Philip curve offers another way to analyze these developments. The traditional Philip curve suggests a stable relationship between unemployment and inflation. Lower unemployment came at the cost of inflation. We can see this in our Philip curve right over here. नीचे वाला जो short run वाला है ना, उसमें हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इन्फ्लेशन आएगी, सिंपल, ठीक हो गया. However, if expectations are adopted, the Philip curve become a vertical at the Nairu at the long run Philip curve. Expansionary fiscal policy may temporarily reduce the will reduce unemployment, but once workers' expectations are adjusted, unemployment returns back to the same level, to the accelerating inflation. तो ये हमारा बेसिकली एक आइडिया है. ठीक है जी. The consequences of fiscal policies are significant. If workers and consumers expect higher future inflation, governments find it much harder to use fiscal stimulus to achieve lower unemployment. Instead, fiscal tightening, such as reducing government spending or increasing tax, may be necessary to curb the inflation. So this is just setting up stage for our evaluative statement about the whole expectation and how does that might work and might not work. तो जब हम उसकी बात करेंगे, so sorry. So in evaluation, the consequence of changing expectation of fiscal policy, there are several points must be considered. एक तो changing expectation depends on the elasticity of SRAS curve. केंद्रीयन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से शॉर्ट रन के अंदर जो है, स्पेशली रिसेशन के दौरान, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. यू रिमेंबर जब आप केंद्रीयन के हिसाब से बनाते हैं, वी टॉक वेरी लेस अबाउट इट, बट शॉर्ट रन का कर्व भी इसी तरह से मैं भी ऊपर ऐसे ही बनाते हुए आ रहा हूँ. It's much more elastic at the lower level of prices at the recession level, and it's much more steeper on this side. राइट. सो उसकी इसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट रन के अंदर, एक्चुअली देर दैट इज व्हाट इट्स अबाउट. यहाँ पे वर्सेस यहाँ पे हम यूजुअली तो LRAS के साथ बनाते हैं, बट इवन शॉर्ट रन के साथ दिस discussion is valid. You won't find this one in much books. So in such conditions, expansionary fiscal policy can still stimulate output and employment without creating upward pressure on the prices. But once you are near full capacity, that is when the inflation is really going to come, and आपका जो ये expectation का issue है, that will fail. Secondly, जो आपका traditional Philip curve था, वो 1970 में तो फेल हो गया था. उसके बाद आप आए हो अपने एक्सपेक्टेड फिलिप कर्व के ऊपर. सो द ट्रेडिशनल फिलिप कर्व ट्रेड ऑफ में नो लॉन्गर अप्लाई. Historical evidence shows that during the 1970s, many economies experienced stagflation का concept, right? तो जो कि आपका फिलिप कर्व का जो एक बहुत ही सिंपल सा रैशनल है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो इन्फ्लेशन के साथ आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज आउट ऑफ द विंडो. 70s के बाद we've experienced stagflation and we're still experiencing that. But again, we do use के नहीं, आज भी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों यूज होता है. Moreover, the structure of labor market has changed significantly since 1960s and 70s.
यूनियंस वीक हो गई हैं, लेबर दुनिया भर से मूव कर रही हैं, एमएनसीज मूव कर रही हैं, तो अब वो स्पाइरल वाला इशू अब इतना एग्जैजरेटेड नहीं है जितना बैक इन द डे होता है। अब अगर आपका वर्कर शॉर्टेज है तो आप माइग्रेशन करा सकते हैं, यू कैन गेट रीजनेबली गुड वर्कर्स, यू अंडरस्टैंड, या एमएनसी कैन मूव अब्रॉड एंड देन दे कैन एक्सप्लॉइट वर्कर्स एल्सवेयर। तो वो जो आपका जो नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो अब खत्म हो जाता है। Additionally, government today are more aware of the dangers of accommodating inflation expectations and are more likely to adopt monetary and fiscal policy focused on maintaining price stability. हमें पता है सप्लाई साइड पॉलिसीज वर्क अ लॉट मोर इफेक्टिवली, थोड़ा सा लॉन्ग रन में ज़्यादा बेहतर वर्क करेंगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों को कंट्रोल में रखना है तो वी सजेस्ट कि सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ बेटर वे फॉरवर्ड, सो यू कैन ऑलवेज प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ओवर हियर। ठीक हो गया। तो ये हमारा इसका है वेरी टफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट जो स्मार्टर हैं वो डेफिनेटली फिर कव और इसका डिस्कशन जरूर जरूर करेंगे।